Hello students. Today's video section is all about SDLC subset, that is high level data link control subsets. On the previous classes, we learn about the different aspects of SDLC. Today's section is all about the SDLC subset. First of all, before starting the SDLC subset, we just focus about the frame structure of the SDLC. So SDLC use the synchronization or synchronous transmission. As I said earlier, all transmission are in the form of frames, and a single frame format suffices, that is meet out the basic requirement or meet our requirement for all types of data and as well as control exchanges. As I said earlier in the previous video classes, a frame is normally, or SDLC frame is normally consisting of 6 basic fields. It's begin with and ends with a flag field, and the second field is basically called the address field. Third one is called the control field, and fourth one is basically called the information field. The information or the user data which comes from the upper layer, because it is basically called data link layer. And the next one is called the FCS, that is called the sequencing concept. So the first particularly flag field normally contain 8 bits, and the address field contain 8-bit expandable, and control field may consist of 8 or 16 bits of information. And the information field is basically called variable length, because the data which is passed from one layer to another layer, it depends upon how much data can be passed from upper layer to lower layer for transmitting data from one node to another node. And the FCS field is containing 16 or 32 bits, that is like um, 2 bytes or 4 bytes, and the flag field again consisting of 8 bits. So as I say earlier, the flag field is consisting of 0, then followed by 6 1, then followed by 0. That is the basic structure, and by the help of that particular like binary bits, the transmitter, or you can say the particularly different layers can easily understood, or the receiving end easily the receiving end can easily understand about the flag field of the subsequent thing. And every individual frame must contain flag field at the beginning and as well as the end of the subsequent particularly frame. So at a time, more than one frame can be communicated from one particularly node to another node. In this case, the flag, address and control fields are basically known as the header part, because as I said earlier, the frame may contain header part, data part and as well as a trailer part. And the next FCS and as well as flag field refer as the trailer part. So basically the 6 fields is divided into 2 basic segments. That is, the first 3 fields are known as the header, particularly header of the frame, and the last 2 fields, that FCS and as well as the flag field, again in this case is normally known as the trailer part, and the information field is called the data part, or you can say the user data part. And the next particularly slide shows that it is normally in control field there are different type of frame formats are there, or you can say the SDLC normally contain more than one frame in its particularly structure. So it normally divide into 3 basic particularly frame concepts, like I frame, U frame and as well as S frame. The I frame stands for, as I say earlier, that is called the information frame, and S frame stands for supervisory frame, and U frame is called the unnumbered frame. So it is basically called the 8-bit sequence of concepts. So first particularly, like the I frame, the very first bit is called 0 and followed by NS, that is NS stands for send sequence number, because whenever the subsequent frame can be passed from one particular node to another node, it normally having a sequencing number or sequence number. And the next part is normally called the PF, that is P stands for full,
and F stands for finish. That is, on the previous particularly classes we learn about, we would learn about the pull and as well as select, particularly like a method. In this case, P oblique F or PF stands for pull and as well as final, and the last one is called the NR. NR stands for received response number. So basically, every individual, like you can say, frame normally consisting of the 8 bit of implementation. So the first information from the first bit is called 0, and 2 3 the second, third and fourth bit is basically called NS, and that is NS stands for signed sequence number. And next particular bit is basically called in this case 5 is called PF. Either it can be a full sequence or the final sequence. And 6 7 8, that is 3 bit in normally containing NR. Similarly, the supervisory frame also, first two frames are 1 and 0, and next two bits are basically called S, that is basically called the S code or the supervisory code, and next again PF and as well as NR. And third is normally in this list, that is called the unnumbered frame, and the first two bits are normally called 1 and 1, that is binary bit 1 and as well as 1, and the next two bits are basically called like U code or M, that is called M is called the unnumbered function bits, that is basically called the U code, or you can say unnumbered code. And the next particularly part is basically called PF, that is full and final, and the last again having the U code, and in this case U code containing 3 bits of information. So first of all, we just focus about the I frame and as well as the S frame and as well as the U frame. Basically, you know that there are basically three types of frames, or the frames which is related with the SDLC determined by the control field. It is it is normally related with the control field of the subsequent frame structure. So in the control field, the first particular bit is 0, then it is called I frame. So iframe is basically or widely implemented for passing information from one node to another node. And next, particularly the first two bits, if the first two bits is called 1 and 0, it is basically called the S frame or the supervisory frame. And the main task or the main like function of the supervisory or S frame is basically it checks for the error, or you can say the error control and as well as the frame control, the data flow control, or the frame which is normally passed from one node to another node, or transmitter end to receiving end. It check for the control, the error control and as well as the frame control. And if the first two bits are normally called 1 and 1, that is double 1, it is basically known as U frame, and U frame is widely implemented for link management. So there are three subsequent particularly frame in the control field list, that is I frame, S frame and as well as U frame. So in this case, I frame is widely implemented for passing information from one layer to another layer, or you can say one particular point to another point. And in the case of supervisory frame, it check for the error and as well as the frame, or you can say it is normally widely implemented for error control and as well as the frame control. And the last unnumbered frame or unnumbered U frame is widely implemented for like link management concepts, like establish connection, maintaining and disconnecting. All the subsequent particularly function of the frame can be widely done by the U frame itself. So in this case, first of all, what is PF? So PF is P stands for pull and F stands for final. Like a pull means when a frame is sent by the primary station toward the secondary, when the address field containing the address of the receiver. So P and F, pulling and as well as finaling, that is pulling or pull sequence is there. So if particular primary station normally forwards or normally passes or sends some information or some data or some particular instruction to the secondary station, like when the address field contain the address of the particular receiver. Similarly, the final means when a frame is sent by the secondary towards primary station when the address field contain the address of the sender. So in this case, ये हम लोग पहले ही particularly जान चुके हैं, या पहले इससे पहले जो वीडियो हम लोग बनाए थे तो उसमें एक चीज मैं बताया था
जैसे कि प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेशन and secondary to primary station, because SDLC normally like structure having like primary station and as well as secondary station. So अगर प्राइमरी स्टेशन जो भी पर्टिकुलरली फ्रेम को सेंड करता है, जैसे कि सेंडिंग फ्रेम टू द सेकेंडरी स्टेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कमांड. एंड इफ जैसे कि आपका सेकेंडरी स्टेशन अगर प्राइमरी स्टेशन को अगर कोई पर्टिकुलरली फ्रेम सेंड करता है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं रेस्पॉन्स. Similarly, NS stands for like it specifies the number of frames being sent. It can calculate how many number of frames are sent. So NS normally how many frames can be sent from primary to secondary station, or it can be on the reverse order, that is normally called response from the secondary to the primary. So NS stands for the number of particularly frames to be sent, and the next is called the NR. NR stands for, as I say earlier, it is basically called receive response number. So like it specifies the number of frames expected in return in a two-way exchange, that is full duplex mode implementation or full duplex mode exchange. And NR number or NR, that is called the like receive response number, will be that the next frame equal if the last frame was not received correctly. So if अगर जैसे कि हम लोग एक फ्रेम को भेज रहे हैं, तो सबसे पहले उसको उसका नॉर्मली एरर चेक किया जाता है, और उसके बाद आपका उसको जैसे कि फ्रेम कंट्रोल किया जाता है. अगर आपका जो फ्रेम आपका रिसीविंग एंड में रीच हो रहा है, वो एक सीक्वेंस नंबर के बीच आपका या सीक्वेंस नंबर को बेस करके वहां पे रीच होता है या वहां पे नॉर्मली पहुंचता है. अगर आपका वो पर्टिकुलरली फ्रेम अप्रोप्रिएट वे में रिसीविंग एंड में नहीं पहुंच रहा है, तो रिसीविंग एंड या रिसीविंग जो स्टेशन होता है, वो आपका एक पर्टिकुलरली रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक एक्नॉलेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं. तो वो एक बार फिर उसको सेंड करने के लिए बोलता है. तो बेसिकली it is the acknowledgement field in the last frame received has any error. The NR frame number will be the particular number of damaged frame is indicating the next for the retransmission. अगर आपका जैसे कि एक बार कंप्लीटली फ्रेम वहां पे पहुंच गया, रिसीविंग एंड पे पहुंच गया है, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, या जैसे कि आपका जो फ्रेम है वो एरर है या उसको डैमेज है, तो उसका जैसे कि एक्नॉलेजमेंट आता है, जैसे कि यू कैन अगेन रीसेंड द सबसीक्वेंस पर्टिकुलर थिंग. And next is basically called the SDLC subset. SDLC subset is nothing, as you know that superset and subset concepts are there. So generally your SDLC, that is high level data control, also known as SDLC, is a bit oriented and as well as switched and non-switched protocol. So it is a data link control protocol and falls within the two layers. It is a communication between the two layers, the data link layer of the open system interface, that is in the OSI model. So your SDLC basically implemented in the case of DLL, that is called data link layer of the OSI model. It has been so widely implemented because it supports both half duplex and as well as full duplex communication lines, and as well as point to point, that is peer-to-peer, and as well as multi-point network communication, and as well as switched and non-switched particular channels. So this type of topics, these topics जैसे कि आपका like half duplex, then full duplex, point to point, and as well as multi-point, switched, non-switched, or particularly non-switched protocols or channels, ये हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं. So दिस पर्टिकुलर थिंग मींस एसडीएलसी वाइडली इंप्लीमेंट क्यों होता है, क्योंकि ये ढेर सारे ऑप्शंस के साथ जाता है, या जैसे कि ये आपका डेटा लिंक लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली सेगमेंट है या इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली एलिमेंट है. सो by the help of the SDLC we can actually communicate, or it can be widely implemented for half duplex communication, and as well as, or you can say half duplex transmission, full duplex transmission, point to point, that is node to node or node to multi node communication, and as well as switched and as well as non-switched, that is switching techniques also widely implement with that. And next, particularly the procedure outlined in the SDLC are designed to permit synchronization or synchronous code transparent data transmission. So ये जो आपका सिंक्रोनाइजेशन है, या दूसरा जो ऑप्शन आपका बेसिकली है कोड ट्रांसपेरेंट डेटा ट्रांसमिशन, और आपका जो ट्रांसपेरेंट डेटा जो पास होता है, जैसे कि इससे पहले एक वीडियो में मैं बताया था आपको स्टॉपिंग ऑन स्टॉपिंग का चीज, जैसे कि एक साथ एक से ज्यादा फ्रेम आपका, जैसे कि वेरिएबल लेंथ ऑफ फ्रेम आपका सोर्स से डेस्टिनेशन जब जाता है या ट्रांसमिशन एंड से रिसीविंग एंड को जाता है, तो नॉर्मली रिसीविंग एंड को
नॉर्मली उसको रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई जैसे कि एवरी 5 पर्टिकुलरली मतलब 8 बिट का एक कम्युनिकेशन होता है, तो इन बिटवीन आपका एक स्टॉपिंग का कंसेप्ट होता है या एक बिट आपका स्टॉप होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ पे लाइक 2 बिट्स आपका बेसिकली स्टॉप होता है 16 बिट आपका ट्रांसमिशन में। तो जनरली आपका स्टॉपिंग का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एडिशनल कैरेक्टर टू द सब्सिक्वेंट फ्रेम which can be easily recognized by the transmitter and as well as particularly the response mode or the response node. Again, unstopping का मतलब होता है उसका रिमूवल। तो जैसे कि आपका एक्टिवेशन आपका डीएक्टिवेशन कंसेप्ट होता है। तो कोड ट्रांसफर जो होता है, जैसे इससे पहले मैं बताया था, जैसे कि एस्केप कैरेक्टर का वाइडली इंप्लीमेंट होता है। इफ योर पर्टिकुलरली बाइनरी बिट दैट इज 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली आपका 5-1 अगर है या 5-1 के बाद आपका 6-1 जब होता है, वो 6-1 बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि 0 में। तो थ्रू व्हिच इट कैन बी इजीली कम्युनिकेट और इजीली like recognized by the subsequent receiving end. And other benefits of the SDLC are that the control information is always in the same position and specific bit patterns used for the control differ dramatically from those in representing data which reduce the chances of error. So आपका जैसे कि ट्रांसमीटर एंड जो भी डेटा सेंड करता है, तो उसमें आपका स्टॉपिंग का कंसेप्ट होता है या इंसर्शन ऑफ बिट्स का इंप्लीमेंट होता है या एस्केप कैरेक्टर का इंप्लीमेंट होता है। जब आपका रिसीविंग एंड में पहुंचता है तो इन दैट केस आपका क्या होता है, जैसे कि आपका जो प्राइमरी स्टेशन या जो आपका ट्रांसमीटर एंड जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी बाइनरी बिट पैटर्न को भेजा है, वो एज यूजुअल वहां पे रिसीव होता है। क्योंकि आप उसमें अगर आपका स्टॉपिंग का इंप्लीमेंटेशन होगा, 0 अगर एक ऐड हो गया, तो वो उसका जो बाइनरी सिस्टम होता है या जैसे कि आपका आस्की कैरेक्टर का कंसेप्ट होता है, वो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो आपका स्टॉपिंग का इंप्लीमेंटेशन होता है या एडिशनल जो आपका बिट का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो वो आपका रिसीविंग एंड में वो आपका अनस्टॉप हो जाता है या जैसे उसको रिमूव किया जाता है। एंड एज वेल एज जैसे कि हम लोग ये पहले भी पढ़े, डेटा लिंक लेयर में आपका जो एसडीएलसी का जो होता है या कोई भी आपका जो फील्ड होता है, फ्रेम में जो फील्ड होता है, वो आपका क्या होता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन को पास करना या एरर चेक करना या आपका जैसे कि फ्रेम को प्रॉपर सीक्वेंस में भेजना या नॉर्मली आपका जो कि लिंक मैनेजमेंट का होना, जैसे कि आई फ्रेम like S frame and U frame, ये सब चीज करता है। So like that, it is quite easy or quite actually quite easily it can communicate from one end to another end. So it is also led to many subsets. So हम लोग को ये पता है जैसे कि OSI रेफरेंस मॉडल में क्या होता था, there are 7 layers are there and each and every layer normally containing different functionality। मतलब हर एक लेयर का एक अलग अलग फंक्शन होता है और उस फंक्शन वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो देयर इज नो डायरेक्टली लाइक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर लेयर्स। तो लेयर का काम क्या होता है, एक पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को या डेटा को जैसे कि एक लेयर से दूसरे लेयर को पहुंचाना। So that's why basically every individual superset having a subset of concepts. So in this case, SDLC is basically called superset, and the subsequent subset are basically called the protocol which are widely implemented with the SDLC. So यहाँ पे हम लोग जो चीज को फोकस कर रहे हैं, the two subsets widely in use are SDLC, that is called synchronous data link control, and second one is called the link access procedure, and that is basically called the balance and unbalance. So in this case it is called balance, that is called LAPB. So let's take about the SDLC subset. So SDLC is considered as a superset and the protocols which are widely implemented with the SDLC or SDLC structure is called the subset. So some of the major subsets of SDLC are, the first one is called LAP, that is normally called link access procedure, and second one is called LAPB, that is called link access procedure balanced, and third one is called LLC, that is called logical link control, and fourth one is called LAPD, that is called link access procedure DChannel. So these particular things are widely implemented with the control frame of the SDLC frame format or SDLC frame structure. So let's begin with the first of all the LAP. LAP protocol are the part of the group or part of a group of data link layer protocol for framing and as well as transmitting data across point-to-point links. So this particular LAP protocol is widely implemented for framing and as well as transmitting data across like point-to-point links. मतलब node to node communications करने के लिए
ये आपका वाइडली इम्प्लीमेंट होता है. बिफोर दैट इट कैन एक्चुअली बिल्ड और मेक द फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट. तो ये फ्रेमिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, जैसे कि framing and transmitting of data across point to point link. And the second particular point says that it originates from IBM SDLC, because जो आपका SDLC स्ट्रक्चर है या जैसे सिंक्रोनियस डेटा लिंक कंट्रोल है, उसमें उसका जो एडवांस पार्ट है वो SDLC है. सो ये आपका नॉर्मली SDLC से ओरिजिनेटेड हुआ है, which normally IBM submitted to the ISO for standardization. क्योंकि SDLC में आपका स्टैंडर्डाइजेशन जब ऐड हुआ, जैसे ISO स्टैंडर्डाइजेशन जब ऐड हुआ, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइजेशन को हम लोग नॉर्मली SDLC बोले, मतलब like a high level data link control. And the ISO developed the SDLC from the subsequent protocol. मतलब SDLC आपका नॉर्मली डेवलप किया गया है ISO स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन इंप्लीमेंट हुआ है जहां पे एक कॉमन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंट हुआ, दैट कैन बी इजीली like you can say communicate from one machine to another machine or one terminal to another terminal. And the SDLC for use in its X25 packet switching network standard. So X25 पैकेट स्विचिंग, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेट स्विचिंग या स्विचिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे X25 जो पैकेट स्विचिंग स्टैंडर्ड होता है, ये आपका वाइडली इंप्लीमेंट होता है SDLC. So that's why it is called the protocol LAP. That's why it is basically called link access procedures. So what is actually, you can say X25. X25 is nothing, it is a network, consists of network of like interconnected nodes to which like the user like the user equipment can like connect. So इससे पहले हम लोग पढ़े थे DTE and DT like DCE. So as you know that आपका जो DTE होता है, जैसे कि डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो होता है वो आपका एक कोई भी एक टर्मिनल होता है, और टर्मिनल नॉर्मली आपका कम्युनिकेट करता है, जैसे कि कोई भी लाइक मीडियम के साथ कम्युनिकेट होता है, वो आपका वहां पे DCE का इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि सर्किट इक्विपमेंट्स का इम्प्लीमेंट होता है. तो यहाँ पे आपका जैसे कि जो कम्युनिकेशन आपका दो अलग अलग इंटरकनेक्शन जो होता है या इंटरकनेक्टेड होता है एक नेटवर्क में बाय द हेल्प ऑफ DTE एंड DC. तो एक DTE दूसरे DTE के बीच आपका जब कम्युनिकेट होता है, वहां पे जो आपका नेटवर्क इंप्लीमेंट होता है, दैट पर्टिकुलर नेटवर्क is widely implemented with the X25 switch like packet switching networks. And the next particularly is called, there are several LAP protocols. Each of these protocol is usually a subset of SDLC like trailer that is called customized for a particular purpose. So यहाँ पे आपका जो LAP का होता है या नॉर्मली आपका लिंक एक्सेस प्रोसीजर जो होता है, उसमें एक से ज्यादा सब मतलब प्रोटोकॉल का इंप्लीमेंट होता है. तो सम ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स आर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड MLP, that is called multi-link procedure, and second one is called link access procedure for modems. Like as you know that modulation and demodulation, modem is a particular like network access device. And third one is called link access procedure for frame relay, and the fourth one is basically called link access procedure for half duplex implementation. So let's particularly start with the first one, that is called MLP, that is multi-link procedure. So in this case multi-link procedure क्या होता है, it basically allow multi-link operations. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है या पॉइंट मल्टी पार्टिकुलरली ड्रॉप या मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन होता है. तो यहाँ पे एक स्टेशन प्राइमरी होता है, एक से ज्यादा सेकेंड स्टेशन होता है. तो कम्युनिकेशन बिटवीन लाइक वन पर्टिकुलर सिस्टम टू अंडर मल्टीपल सिस्टम और मल्टीपल सिस्टम टू मल्टीपल सिस्टम. सो इट इज बेसिकली अलाउड द मल्टी लिंक ऑपरेशंस. एक से ज्यादा लिंक आपका क्रिएट हो सकता है, एक मैसेज का एक फ्रेम का एक से ज्यादा मल्टी लिंक क्रिएट हो सकता है. इट इज एन अपर सब लेयर ऑफ द डेटा लिंक लेयर. ये आपका डेटा लिंक लेयर का एक अपर सब लेयर होता है दैट यूजुअली ऑपरेट्स अमंग पैकेट लेयर. जैसे कि वैसा ही मॉडल में बताया था, डेटा के बाद आपका सेगमेंट आता है, सेगमेंट के बाद आपका बेसिकली जो कन्वर्सन होता है एक लेयर से दूसरे लेयर. सबसे पहले डेटा आपका कन्वर्ट होता है सेगमेंट में, सेगमेंट अगेन कन्वर्ट होता है आपका पैकेट में, पैकेट अगेन कन्वर्ट होता है फ्रेम में, एंड फ्रेम आपका नॉर्मली कंसिस्टिंग ऑफ बाइनरी बिट्स. सो आपका नॉर्मली जो कन्वर्सन का जो कंसेप्ट होता है, डेटा कन्वर्टिंग इनटू सेगमेंट, सेगमेंट कन्वर्टिंग इनटू फ्रेम, फ्रेम सेगमेंट कन्वर्टिंग इनटू पैकेट, पैकेट कन्वर्टिंग इनटू फ्रेम. सो ये आपका जो ऑपरेशन होता है, ये नॉर्मली आपका पैकेट लेयर का इम्प्लीमेंटेशन होता है.
and it normally use single data link protocol, and again it gives permission for multiple physical links. So लाइक मल्टी लिंक प्रोसीजर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, ये नॉर्मली आपका एक लिंक प्रोवाइड करता है, फिजिकल लिंक प्रोवाइड करता है एक से ज्यादा पर्टिकुलर डिवाइसेस को या एक से ज्यादा टर्मिनल को आपका डेटा कम्युनिकेट करने के लिए. एंड सेकंड इन द लिस्ट दैट इज कॉल्ड LAPM, and LAPM stands for basically link access procedure for modem. So it is widely implemented with the modem. As you know that modem having synchronous and asynchronous communication, so that's why it is basically used in error correcting modems. So जो आपका कंप्यूटर के साथ जो मॉडेम का कम्युनिकेट होता है या कनेक्शन होता है, तो ये आपका जो एरर्स आता है वो एरर को करेक्ट करने के लिए वाइडली इंप्लीमेंट होता है. एंड ट्रांसमिशन अमंग कंप्यूटर एंड मॉडेम्स दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. जो आपका मॉडेम और एज वेल एज आपका कंप्यूटर के बीच एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, ये आपका नॉर्मली वो मैनेज करता है. एंड इट ट्रांसमिट डाटा इन फ्रेम्स और पर्टिकुलरली पैकेट. सो ये डिपेंड कर रहा है आपका जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो आपका पैकेट में या फ्रेम में हो सकता है. जैसे कि पैकेट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो आपका फ्रेम होता है. एंड द थर्ड वन इज नॉर्मली इन द लिस्ट दैट इज कॉल्ड लिंक एक्सेस प्रोसीजर फ्रॉम फ्रेम रिले. इट इज वाइडली इंप्लीमेंट फॉर द रिले ऑफ द फ्रेम. मतलब जो सीक्वेंसिंग आपका होता है एक सीक्वेंस के बाद, मतलब एक फ्रेम का जो सीक्वेंस नंबर होता है एक के बाद एक, जैसे कि आपका रिले या ट्रांसमिट करेगा. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स डेटा लिंक फॉर द फ्रेम रिले. ये आपका डेटा लिंक प्रोवाइड करता है फ्रॉम जैसे कि फ्रेम रिले के लिए या फ्रेम रिले नेटवर्क्स, एंड डिजाइन फॉर यूज अमंग विद द फ्रेम रिले. सो इट इज डेडिकेटेडली implemented for like the frame relay concepts, and it is a part of network communication protocol. जो आपका communication protocol होता है, communication protocol का ये सबसे important part होता है. It simply ensures that whether the frames are error free and execute in correct sequence or not. तो ये इसके अलावा ये दो चीज आपका करता है. जैसे कि सबसे पहले वो चेक करता है जैसे कि जो भी फ्रेम आपका ट्रांसमीटर एंड से रिसीविंग एंड को जाता है या एक लेयर से दूसरे लेयर को जाता है, तो वो सबसे पहले चेक करता है जैसे कि फ्रेम आपका एरर फ्री है कि नहीं, या वो उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं. सो द मेन टास्क ऑफ द लिंक एक्सेस प्रोसीजर फ्रॉम फॉर फ्रेम रिले इज नॉर्मली कॉल्ड, it is normally ensures whether that particular frame having any error or not, or it having a proper sequence or not. And third in the fourth in the list that is called link access procedure for app replay. So it is basically used for the ship and shore like transmission. Ship and shore transmission क्या होता है, जैसे कि एक रिमोट सिस्टम या दूसरे सिस्टम के बीच आपका कम्युनिकेशन होता है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, आपका जो शिप होता है वो आपका नॉर्मली ओशन में होता है, या शोर जो होता है शोर को हम लोग बेसिकली कोस्ट बोलते हैं या जैसे कि बीच बोलते हैं. तो एक कम्युनिकेशन होता है जैसे कि जो भी डेटा कम्युनिकेट होता है या जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, या आपका नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आता है या गुड्स वगैरह आता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए आपका ओशन एंड बीच के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप यहाँ पे सिंपल वे में बोल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को कम्युनिकेट करने के लिए जो हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है, that particular thing is basically called LAP export. So it is all about the MLP and LAPM and LAPF and as well as LAPX. And the next in the list that is called LAPB, that is called balance, or you can say link access procedure for balance. So it is a data link protocol that manages communication and as well as packet framing between DTE and DCE devices. That is like data terminal equipment and data circuit equipment or data circuit equipment devices, and the is the best particular known for its presence in the X25 protocol stack. तो X25 क्या है, एक नेटवर्क का इम्प्लीमेंटेशन होता है जैसे कि नोड टू नोड कम्युनिकेट होता है. तो इसका जो LAP का मेन जो बैलेंस का जो मेन होता है, जैसे इससे पहले मैं बताया था बैलेंस एंड नॉन बैलेंस कंसेप्ट. सो इन दिस केस it is widely implemented with the packeting or the like packet framing like communicate between two DTAs, that is one system to another system. It also shares the same frame format, जो आपका फ्रेम फॉर्मेट जो होता है ट्रांसमीटर एंड से रिसीविंग एंड को, एंड फ्रेम टाइप एंड एज वेल एज फील्ड फंक्शंस एज SDLC एंड एज वेल SDLC. तो ये आपका नॉर्मली फ्रेम फॉर्मेट एज यूजुअल फ्रेम फॉर्मेट कैन बी सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एंड सिमिलर टाइप मतलब टाइप में आपका कोई चेंजेस होना नहीं चाहिए, एंड एज वेल एज द फील्ड फंक्शंस ये आपका सब चीज मेंटेन करता है या शेयर करता है. And last is normally in the slide that is called LAP is restricted to the ABM, that is asynchronous balance mode. ये भी हम लोग पहले ही पढ़े हैं.
transport mode and is appropriate only for combined station. So इससे पहले भी मैं बताया था, there are three types of stations are there. One thing is called primary, another thing is called secondary. And primary station, secondary station के बीच जो communication होता है, ये आपका normally command frame send करता है कौन? Primary station. और secondary station आपका response frame provide करता है. But another station is also there in the list, that is called combined station. Combined station, it consisting of primary and as well as secondary station. It is a combination of two things. So the primary station is treated as a primary one, and the secondary station is obviously called the slave concern. But in the case of combined station, it acts as a like primary station and as well as secondary station. So the LAP is restricted in to the ABM. That is, आपका जो asynchronous balance mode होता है या transfer mode होता है, is appropriate only for combined particular station. ये combined stations के लिए widely implement किया जाता है. And it normally circuits can be, or the LAP circuits can be established by either the data terminal equipment, that is DT, or data circuit terminated equipment, that is called DC. So it is widely communicated, और the circuit जो होता है LAPB का, तो वो आपका normally दो like एक node होता है और एक communication जो होता है या दो equipment के बीच आपका normally like establish करता है. Then second is called the station initiating the call is determined to the primary and as well as responding station to the secondary. तो ये जो आपका कॉल कम्युनिकेशन जो होता है या कॉल होता है वो डिटरमाइन करता है जैसे प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी स्टेशन. सो प्राइमरी स्टेशन का काम होता है कमांड सेंड करना और जो आपका सेकेंडरी स्टेशन होता है वो रेस्पॉन्डिंग स्टेशन होता है. एंड अगेन LAP यूज द ऑफ द P/F, that is full and final bit is somewhat different from that of the particular other protocols. So ये आपका full and final का implementation करता है. So again it is bit oriented protocol derived from SDLC. So ये आपका bit oriented protocol है, जैसे कि इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे bit and byte oriented, character oriented and bit oriented protocol. And next is called the LLC. LLC is basically stands for logical link control. So logical link control is normally called upper sub layer of the data link layer of the open particular system interconnection, that is called OSI reference model for data transmission. So again your LLC is widely implemented, or it is the most important segment or part of, or you can say subset of DLL, that is data link layer का ये सबसे important section होता है एक आपका LLC. ये आप इसलिए आपका ये अपर सब लेयर का इंप्लीमेंट होता है और ये आपका कम्युनिकेशन किसके साथ करता है, जैसे कि आपका मीडियम एक्सेस कंट्रोल के साथ मैक. तो आपका बेसिकली LLC एंड मैक like you can say like LLC stands for logical link control and MSC stands for medium access control. These are the main particularly upper sub layers of the data link layer. So it acts at acts an interface between network layer and as well as the MAC sub layer of the data link layer, because MAC जो होता है वो आपका नेटवर्क लेयर के साथ कम्युनिकेट होता है और ये आपका नॉर्मली पार्ट एक है DLL का, मतलब data link layer का. So LLC sub layer is mainly used for its multiplexing properties. So basically it is widely implemented for multiplexing. As you know that multiplexing is widely implemented for converting, or like you can say many signal can be converting into the single signal. It allows several network protocol to operate simultaneously within a multi-point network over the same network medium. So ये आपका जैसे कि simultaneous process करता है multi-point network के लिए same network के through. And next is normally LLC normally containing three different classes. The class 1 is called connectionless, and class 2 is called connection oriented, and class 3 is called acknowledged connectionless. So the first one is called connectionless. This service sends and receives link service like data unit, that is called LSPU, without the need for acknowledgement. तो ये acknowledgement के बिना आपका normally communication करता है, and it supports the point-to-point, multi-point and broadcast communication and is suitable for higher level protocols that do all the sequencing, addressing, routing and as well as recovery. So ये आपका सब चीज जैसे कि आपका sequence maintain करता है, या जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो एड्रेस कम्युनिकेशन करने के लिए जो एड्रेसिंग सिस्टम होता है, या जो आपका कम्युनिकेशन जो रूटिंग कंसेप्ट होता है, या रिकवरी जो आपका अगर कुछ एरर होगा तो उसको रिकवर कर सकता है. सो द मेन पर्टिकुलर टास्क ऑफ द LLC class 1 is widely implemented for like some higher level protocols, or high level protocols are widely implemented for sequencing, addressing,
routing and as well as particular recovery. And the second in the class is called connection oriented, that is CO. This is a connection oriented service that provides point to point link between like LSAP, that is called link service access point. So the link access service point होता है उसके बीच आपका एक कनेक्शन स्टेप मतलब इट इज बेसिकली कॉल्ड गाइडेड मीडिया के साथ आपका इंप्लीमेंट होता है. एंड थर्ड वन इज कॉल्ड the class 3 is consisting of acknowledgement connectionless, that is called AC. This is a connectionless acknowledged like implement that is rarely used. So ये आपका क्योंकि आपको पता है जैसे कि कोई भी आपका कमांड सेंड होता है उसका जो रेस्पॉन्स मिलता है by the help of that thing that is pulling and selecting concept में आपका acknowledgement सबसे important होता है. And last is normally in the list that is called LAPD, that is called DChannel. So it is basically layer 2 protocol used like usually required for ISDN D channels, and it is being derived from the link access protocol belt. So ये LAPB से आपका derived हुआ है मतलब ये आप बोल सकते हैं LAPB का ये एक सब लेयर है या सब लेयर प्रोटोकॉल है. It was specially designed and developed to simplify like simply satisfy the signaling requirement of the ISDN basic access. जो signaling concept होता है signal communication के लिए इसको ज़्यादातर develop हुआ है. The main objective of the LAPD is simply to provide secure, error-free connection among two endpoints just to reliably transport messages or data frames of the layer 3. मतलब it is widely implemented for like provide the secure connection and error-free connection, and as well as like data can be easily communicated from to the subsequent layers like and as well as to subsequent endpoints. And a D channel is basically or generally data or signaling channel that is required for communication among switching equipment, and it also supports acknowledged operations and unacknowledged operations. So acknowledged operations क्या होता है? In this operation, information or data transfer might be done either with the single frame transmission or with multi frame transmission. So आपका जो एक्नोलेजमेंट ऑपरेशन होता है जैसे कि एक फ्रेम आपका नंबर सिंगल फ्रेम या मल्टी फ्रेम जब आपका ट्रांसमीटर एंड से रिसीविंग एंड को पहुंचता है इमीडिएटली उसका एक रेस्पॉन्स मिलता है जिसको हम लोग एक्नोलेजमेंट बोलते हैं. तो एक्नोलेजमेंट ऑपरेशन आपका नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन होता है या जो इन्फॉर्मेशन और डाटा ट्रांसमिट होता है ये आपका उसके ऊपर बेस्ड है. और अनएक्नोलेजमेंट ऑपरेशन मतलब है दिस ऑपरेशन बेसिकली रिक्वायर्ड अननंबर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रेम. सो अननंबर्ड मतलब द सीक्वेंस आपका जैसे कि वेरिएबल कंसेप्ट जो होता है कितना फ्रेम आपका इंप्लीमेंट होगा ये आपका कंप्लीटली अननंबर्ड पर्टिकुलर यू फ्रेम के ऊपर ये आपका डिपेंड होता है. सो इन दिस सेक्शन लाइक जैसे एसडीएल के जो एसडीएलसी का जो हम लोग सेक्शंस पढ़े हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं एसडीएलसी. एसडीएलसी में आपका जैसे कि फ्रेम या सो एंड सो थिंग हम लोग पढ़े हैं. उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसडीएलसी पढ़े हैं. देन उसके बाद आपका एसडीएलसी फ्रेम फॉर्मेट पढ़े हैं. एंड इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट the SDLC subset. तो different particular subset जो आपका different like subset या protocols का जो concepts होता है SDLC का जो subset होता है इसके ऊपर हम लोग focus किए. So I hope so you go through this video and maximum contents can be learned from the SDLC. Thank you.